गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू RLC। आज हम लोग राकेश लर्निंग सेंटर में मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है हमारा पोलर फॉर्म। और इसी पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल form of a complex number। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है जो एक्स वाई प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो सपोज दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is your y-axis। Generally, real part or real numbers are plotted along x-axis, or imaginary part or imaginary numbers are plotted along y-axis. So x-axis is also called a real axis, and y-axis is known as imaginary axis। This is your origin। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया और कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लिया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किए। देन the line OP makes an angle theta with the x-axis in anti-clockwise direction। This is our argument or amplitude Z of this complex number Z। तो ये XY प्लेन में कहीं भी हमारा पॉइंट हो सकता है। तो उस जो पॉइंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। So suppose we have given complex number z is equal to x plus iy। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, r इंटू कॉस थीटा मान लिया, ये इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन 2। ऑन स्क्वायरिंग 1 and 2, on squaring and adding equation 1 and 2, we get r square is equal to x square plus y square। then r is equal to root under x square plus y square। और ये हम तो जानते हैं कि हमारा मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट इज मॉड z। Now again on dividing 2 by 1, we get tan theta is equal to, take here modulus, that is mod of y by x। From here we will find theta is equal to tan inverse modulus of y by x, that is tan inverse imaginary part of the complex number divided by real part of the complex number। After that we have, since z is equal to x plus iy, so in place of x and y put r cos theta and r sin theta, we get r cos theta plus I into r sin theta। take r as a common, then cos theta plus I sin theta। here r is the modulus, theta is the amplitude or argument। then here r is equal to mod of z, theta is equal to argument of z, argument or amplitude of z। now since
the given complex number lying in the first quadrant, then theta is the argument or amplitude. But when it lying in the second quadrant, in the third quadrant, in the fourth quadrant, then the amplitude is different. So we will write here the basic concepts of the amplitude. Case 1. If x greater than 0, y greater than 0, then z lies in first quadrant. Therefore, argument of z is equal to theta. Therefore, polar form is z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Case 2. If real part is negative, that is x is less than 0, imaginary part is positive, y greater than 0, then z lies in second quadrant. Therefore, argument z is equal to phi, and it is equal to pi minus theta, and theta is obtained by this formula. If x real part is negative, imaginary part is also negative, then z lies in third quadrant. Therefore, in this case, argument of z is phi, that is minus pi plus theta. Case 4. If x is positive, real part is positive, imaginary part is negative, then z lies in fourth quadrant. Then in this case, argument of z is phi, that is equal to minus theta, and theta is obtained by this formula. Now therefore, required polar form is in all these cases. Z is equal to r, then cos phi, that is the amplitude or argument, plus I sin phi. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पोलर फॉर्म का कंसेप्ट समझ गए. अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक क्वेश्चन लिया, कन्वर्ट -1 प्लस आई इंटू पोलर फॉर्म. देन फर्स्ट, फॉर पोलर फॉर्म we have to find its modulus. So first we will assume z is equal to -1 plus I. Here it is in the form of x plus iy. So mod of z, that is r, it is equal to real part square plus imaginary part square, that is √2. For theta, we have tan inverse mod of imaginary part by real part, that is tan inverse 1 by -1, that is tan inverse 1, that is pi by 4. Now since x is less than 0, y is greater than 0, real part negative है और imaginary part positive है, therefore z lies in second quadrant, and in second quadrant we have argument is equal to phi, that is pi minus theta. It means pi minus pi by
4, that is 3 pi by 4. Therefore, our required polar form is Z is equal to R cos phi plus I sin phi. Here R is root 2, then cos phi is cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. Now see one more example. Suppose you have Z is equal to -1 minus root 3i. Convert it into polar form. So first we will find its mod. Mod Z is equal to R, that is -1 square modulus of Z. This will be root 4 and 2. Now we will find theta. Theta is equal to tan inverse mod y by x. That is tan inverse root 3. That is pi by 3. Since Z lies in third quadrant, therefore argument of Z is equal to phi, which is equal to minus pi plus theta. Minus pi plus pi by 3, it means minus 2 pi by 3. Therefore required polar form is Z is equal to R, then cos phi plus I sin phi. R is the modulus, that is 2, then cos phi, cos minus 2 pi by 3 plus I sin minus 2 pi by 3. And we know that cos of minus theta is plus cos theta, then it becomes 2 cos 2 pi by 3. Sine of minus theta is minus sin theta, then I sin 2 pi by 3. Okay, thanks.